sister? Hi guys, I'm Deeksha. Kritika is missing right now, so there's no Kritika. But hi guys, I'm Deeksha. Welcome to our podcast. What's up, sister? Guys, before I get into the podcast, I just want to let you know that our podcast is Spotify exclusive, which means it's only and only available on Spotify. So go listen to us on Spotify. So basically, I'm doing this podcast alone. It's a solo episode for the very first time on WhatsApp Sister. हिस्ट्री ऑफ व्हाट्सअप सिस्टर फर्स्ट टाइम सोलो एपिसोड हो रहा है. अमान मेरे साथ बैठा हुआ है. आई एम नॉट ऑल अलोन. वाई इज कृतिका नॉट हियर? एवरीवन मस्ट बी वंडरिंग कि कृतिका क्यों नहीं है. सो कृतिका इज नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ, बट वी हैड टू रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट, सो that's why we decided, so let's just go solo. And you all know that I'm very great on riding solo. Main motto of the solo episode is that we are going on a trip on Monday, and we have to record, like pre-record so many episodes so that we can cover it जब तक हम वहाँ पर हैं, and we don't want to miss a week again. So that's why I'm recording this one. हमने last podcast में बताया था that we are planning a trip to Hong Kong, but now हम हांगकांग नहीं जा रहे. We are going to Bali. Super excited for it. I haven't been to Bali, बट कृतिका जा चुकी है बाली. सो वी आर डूइंग अ फैमिली ट्रिप. मम्मा पापा मैं और कृतिका हम चारों बाली जा रहे हैं, एंड इट्स अ लॉन्ग ड्यू ट्रिप. फाइनली ये हो रही है एंड आई एम सो एक्साइटेड. सो मंडे को हम बाली में होंगे. बीचेस एंड एम्बियंस, एनवायरमेंट, सर्कमस्टांसेस, एवरीथिंग विल बी amazing. Life will be amazing. Anyway, I am doing this podcast alone, so I posted a story on Instagram, like if you want to ask something about anything, just ask away. So I'm going to read out questions and we'll try to answer it as honestly as we can. So let's start. मेरे को ऐसा लग रहा है मैं YouTube कर रही हूँ. Also, before getting into this episode, I just want to let you know, guys, that the story I posted, and there's so many questions about how did you lose your weight, share your weight loss journey, and let us know your diet and workout routine. I'm so sorry, guys, but I really want to film this on YouTube, and I don't know what's going on with me right now these days. I'm not able to like sit down properly and talk in front of the camera alone, which I am doing right now. So maybe after recording this podcast, I'll record a YouTube video sharing my weight loss journey and everything I did. There was this time, it's not like I wasn't happy with myself, but it was very unhealthy for me. I had so many problems with my cycle, with my skin. I was facing so many problems. I was on the verge of getting PCOD, and मैं इतनी डरती थी कि मेरे को PCOD तो नहीं है. मैं इतना डरती थी कि मैंने आज तक कभी चेक भी नहीं करवाया कि मुझे PCOD तो नहीं है. उसकी मुझे बहुत डर लगता था कि कभी भी ऐसा वो आ ना जाए, बिकॉज आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स एंड एवरीथिंग. ऑब्वियसली एवरीवन इज, बट मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है. मुझे पता होता है अंदर से कि मुझे ये है, बट मुझे लगता है अगर ये टेस्ट में आ गया तो बिल्कुल श्योरिटी मिल जाती है ना ऐसे माइंड को. मुझे लगता है अगर मेरे को माइंड को मेरे को श्योरिटी मिल गई तो मैं उस चीज़ को कभी ठीक नहीं कर पाऊंगी. दिस इज़ माई वे ऑफ मैनिफेस्टेशन. फॉर एग्जाम्पल, if I'm not well, if I'm not keeping well, I know that I have fever. Also in pandemic, when everything was going on, the COVID and everything stuff, whenever I used to get sick, I was very sure अच्छा all the symptoms were like ऐसा ही था कि अच्छा मेरे को यही प्रॉब्लम है. बट मैं अपने माइंड को बोलती थी नो आई एम फाइन, नो आई एम फाइन. आई took all the precautions and everything, but मैं अपने माइंड को ही बोलती थी नो आई एम फाइन, आई विल बी फाइन इन 2 days. एंड मैं सच्ची में 2 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो जाती थी. दिस रियली हैपन्स विद मी, सो दैट्स वाई आई डिडंट गेट इट टेस्टेड बिफोर एज वेल व्हेन आई हैड दिस इशू विद माई बॉडी एंड एवरीथिंग, बिकॉज ऑल द सिम्टम्स वर ऑफ PCOD ओनली. मेरे को मेरी साइकिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. इनिशियली मेरे को 15-20 days तक आई यूज टू ब्लीड ओनली. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग इट, गाइज. आई यूज टू ब्लीड फॉर 15-20 days. देन 5-7 days का बीच में गैप आता था जिसमें कुछ नहीं होता था. देन आफ्टर 7 days फिर से वही सेम साइकिल स्टार्ट हो जाती थी. देन मैं फिर से 20 days के लिए ब्लीड करना स्टार्ट कर जाती थी. सो इट वॉज रियली बैड, एंड द ओनली इशू वॉज माई वेट. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई न्यू आई हैव टू रिड्यूस माई वेट, एंड आई डोंट नो, समथिंग हिट मी. अकॉर्डिंग टू मी, whenever someone asks me that how did you reduce weight, actually I've read it somewhere. If you want to work out, if you want to push yourself to do things, if you can't get the motivation, you just have to channelize those emotions
which you're dealing with or which you're having right now. So I channelized my anger and rejection. I was going through a phase at that point of time, and this guy rejected, not kind of rejected me, this guy betrayed me in a way. We haven't dated, हमने कभी date नहीं करा था. So मैं ये पहले भी podcast में बोल चुकी हूँ that those relationships in which you don't know like what to call those relationships. You're not dating that person, you're not in a relationship with that person, you're not friends with that person, but it's just that you're on a talking stage. उस talking stage पे ही आप इतना ज़्यादा attach feel कर जाते हो उस बंदे से that you start feeling for that person, and in your mind he's your boyfriend, but in real life he is not your boyfriend. I hope you're understanding me right now. So this thing happened with me, and this guy came into my life. We used to talk, and I genuinely felt at that point of time, okay, he's my person and he will be my boyfriend. I'll be in a relationship with him and it will be all fairy tales and everything. So he betrayed me in some way. Anything वो अभी तो I really laugh whenever I think about him right now, and I'm so grateful for him. I'll tell you why. At that point of time the pandemic was going on, so हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, कुछ नहीं, अपने friends वगैरह से नहीं मिल सकते थे. I thought why not channelize this thing for myself, for my benefit. So I ordered बॉक्सिंग बैग अमेजोन से एंड मैंने उसको टेरेस पे लगा दिया था. एंड आई यूज टू डू बॉक्सिंग. मेरे को नहीं आती बॉक्सिंग बिल्कुल भी, बट मैं पूरे बॉक्सिंग ग्लव्स वगैरह पहनकर पूरी बॉक्सिंग पंचेस वगैरह मारती थी उस पर. एंड मैं बहुत ज़्यादा मैं उसका फेस इमेजिन करती थी, टू बी ऑनेस्ट. मैं उसका फेस इमेजिन करती थी उस पर कि नाउ आई एम पंचिंग ऑल दोज इमोशंस ही मेड मी फील इन दीज 2 months. आई वॉज जस्ट चैनलाइजिंग माई एग्रेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई स्टार्टेड डूइंग इट, एंड उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने लग गया था. मतलब मैं 10-15 मिनट्स के लिए वो करती थी एंड उसमें एग्रेशन मेरा निकल जाता था. तो आई यूज टू फील सो गुड. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग आउट प्रॉपरली, बिकॉज मेरे को आदत पड़ गई थी कुछ करने की पूरे दिन में. सो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, आई स्टार्टेड विद माई डाइट, एंड आई डोंट नो, एवरीथिंग just started falling into place. And to be honest, I'll do this detailed video on YouTube which I'm going to film after this episode for sure, and which you'll see next week shortly. मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी, but this thing really helped me. I channelized my aggression, my the rejection which I faced and everything. I genuinely lost so much weight. I literally lost 20 kgs. I feel so proud whenever I go back and see my pictures, and I was like, I was very unhealthy at that point of time. After losing weight, my cycle बिल्कुल perfect हो गई. Like अभी भी 5-10 days ऊपर नीचे होता है, but I don't bleed for 15-20 days. Like it's for 5 days, which is very normal. बहुत डिटेल वीडियो हो रहा है, but सब कुछ ठीक होने लग गया. मेरी स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह सब कुछ ठीक हो गई. So the main issue was my weight, and I reduced it, and I'm so proud of it. So if you want to see a detailed video, go to my YouTube channel, which is Diksha Khurana. I'll be very much active on it. I'll try to be very active on it after I post my weight loss journey. So yeah, let's get into all those questions which I've received on Instagram now. किसी ने पूछा life goals बताओ अपने. There are so many goals I have in my life. I'm not very crazy about cars, but I genuinely love luxury cars, and I love to experience luxury in my life. Whenever I walk, I just think about all the luxury which the world has to offer, and I'm like, I want this, I want that, I want everything by my own, not because of someone, not by someone. I just want it by my own. I want to earn so much in my life that अगर मैं किसी भी चीज़ पे हाथ रखूँ, I'm able to buy it. That's my main goal in life, and I think so it sums up everything, and इसमें सब कुछ ही आ जाता है. When you have this privilege to buy anything you want, anything you need, and go anywhere, travel anywhere in the world, and live your own life on your own terms, that is luxury for me. And for that I know I have to work really hard, and that's what I do. This is my life goal. Are you dating anyone? No, I'm not dating anyone right now. Why solo? Where's Kritika? I already answered this. The next question is manifestation, and we've been receiving so many questions about manifestation, and I really want to do it in detail with Kritika again, because Kritika is the main reason why I started manifesting things, if that makes sense, because she is the one who introduced me to this world of manifestation, and I wasn't a believer. Now I'm a hardcore believer of manifestation. I literally changed my life because of manifestation. I still practice it every night. Literally before going to sleep, I sit for like
2 or 3 minutes. Whenever I sit, I just do all those affirmations. I just say that I'm very grateful for everything I have in my life, for the work I'm doing, for the body I have, for the people I have in my life, for keeping them safe and healthy, for keeping me safe and healthy. So these are the affirmations I always do before going to sleep, and this actually works for me. So manifestation has played a major role in my life. There are so many things I'm experiencing right now as well, which is because of manifestation. I'll definitely do a detailed video with Kritika on this one. But if you're not a believer, I'm just telling you to start with the smallest thing you can even imagine. This is the smallest example I got from Kritika when I wasn't a believer of manifestation. So she just told me, like, imagine anything, the smallest thing in your life. Just think about it for like few minutes and just stop thinking about it, and you'll definitely see it coming to your way. I don't know kaise bhi aayega, but you'll definitely see it. I'll give you one homework for it. Just imagine a flower, whatever color flower you want. Like whenever I go to a florist, white roses वहाँ पे नहीं होते हैं. So I am imagining white roses right now in my head, and मेरे सामने वो पूरी picture आ रही है white roses की. ये मेरे लिए manifestation है. तो मैंने imagine करा, let's just stop thinking about it, just start डूइंग योर ओन वर्क. अभी ऐसे स्टार्ट करता है, आप भी कुछ ऐसे छोटी सी चीज़ सोचो एंड आई एम वेरी श्योर यू विल सी इट. एंड अगर आपके साथ ये होता है ये, तो देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, जस्ट टेल अस कि आपने क्या सोचा और क्या आया आपके सामने. वेट लॉस टिप्स गाइस, आई प्रॉमिस मैं इसके बाद वीडियो शूट करने वाली हूँ वेट लॉस की. ओके, द नेक्स्ट इज हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड फॉर वर्क. This is very tricky question actually. That days when you don't really want to work, and I think ये वो वाले days चल रहे हैं अभी मेरे, when you're just not so motivated to do things. जब भी कोई brand का collab आता है या फिर कुछ आता है, and that times when you really don't want to work and there's nothing which can push you and which can motivate you in your life. But sometimes because of the deadlines and because of the pressure, you have to motivate yourself, and I think so that's the thing which works for me. Whenever I don't have motivation to work, my manager Nikita pushes me like, अच्छा ये deadline है आपको ये करना है वो करना है. एंड तब ज़बरदस्ती उस पर जब एक बार हम ग्राउंड पे आ जाते हैं ना, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वी जस्ट स्टार्ट शूटिंग. उसके बाद बस उतने तक की मोटिवेशन चाहिए होती है, उतने तक का पुश चाहिए होता है, एंड उसके बाद जस्ट गो विद द फ्लो. एंड यही होता है, गो विद द फ्लो, एंड वी जस्ट स्टार्ट शूटिंग एंड सब कुछ होने लग जाता है, प्लेस पे आने लग जाता है. सो अकॉर्डिंग टू मी, आई जस्ट नीड अ पुश from someone, a deadline from someone, actually, because I'm the person who works on deadlines. Actually, I've been this child who procrastinates a lot. जब भी कोई पेपर भी होता था, मैं सोचती थी मैं लास्ट के दिन पढ़ लूँगी तो ताकि मुझे अच्छे से याद रहे पेपर वाले दिन. सो मैं ऐसी बच्ची थी कि जिसको मैं, जो लोग होते हैं ना पहले से 1 वीक पहले पढ़ने लग जाते हैं, मैं लास्ट के डे पढ़ती थी ताकि मेरे अकॉर्डिंग ये होता था कि मुझे बहुत फ्रेश रहेगा ये सब कुछ याद करना. सो मैं हमेशा से बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे से बिलीव करती थी, एंड स्टिल आई डू दैट. So I just need a push from someone, and if you're not motivated enough to do work, I think you need someone in your life who pushes you to do something in your life. And it's not good to stay at home and not doing work for like days like that, days when you don't actually want to do work, and आपको break लेना is very important. But आप break भी तभी लो when you know that आप इतने टाइम से काम कर रहे हो and you have completed your stuff and everything is off your checklist. That's when you can take a break, proper break, and उस टाइम पर वो break को आप regret भी नहीं करोगे कि मैं break ले रही हूँ. You'll be at peace. अच्छा मेरा काम हो रखा है. Okay, the next question is how to overcome breakup. I've tried everything, I just can't. I think I'm the worst person to ask this, how to overcome a breakup, because I'm a person who gets attached very easily and who takes forever to detach from a person. What's Up Sister family knows that I took 4 years to move on from a person, and I finally moved on. But what actually helped me, starting ke years maybe I haven't figured out this thing, but what actually helped me to move on is I started talking to different people. I started going out, genuinely involved in the sense, अच्छा अच्छे से बात करना है, ऐसा नहीं कि यार for the sake of it I'm talking to that person. No, I started talking to a person, and whenever you start talking to someone, आप जब उसकी लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो and you start getting to know that person, आप हर नई चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो. अच्छा एक नई लाइफ, एक नई इंडिविजुअल की लाइफ आपको पता लगती है, एंड आप बाहर जाना स्टार्ट करते हो उसके साथ, एंड आप डिफरेंट मेमोरीज एक बिल्ड करने लग जाते हो. पास्ट मेमोरीज को आई थिंक सो फेड होने लग जाते हैं धीरे धीरे. आपको पता भी नहीं लगता आप कब अपने एक्स से मूव ऑन कर लेते हो.
So, according to me, if you're a person who's like sitting at home and you're constantly checking on your ex, you should just get up and go out with your friends, start talking to a new person, go out with that person, and get genuinely involved in his or her life. And you'll feel better. There will be one day when you know, Acha, I've moved on from this person, and according to me, you can't forget about someone with whom you shared memories and good memories or bad memories, whatever are those. So you just can't wipe those memories off. आप properly, I don't think so किसी से move on करते हो, because अगर आपकी life का एक बार कोई part बन जाता है, I feel वो part आपके heart और brain में कहीं रहता ही है. You just have to seclude it from everything else and just lock it somewhere, if that makes sense. मैं बहुत बारी बोल रही हूँ if that makes sense, because I'm very nervous recording this podcast alone, but it's okay. Cafe recommendation, please, in Delhi. So this is a very fun question, and recently I've started going out and I've started different cafes and restaurants in Delhi. मैं अपने recommendation बताना चाहूँगी. First हम start करते हैं food से, and मान भी बताएगा थोड़े से. If you love Pan Asian, recently I went to Maruchi, कुतुब मीनार के पास ही है. It's लाडो सराय मार्ग पड़ता है कुछ वहाँ पे. तो Maruchi is a very nice restaurant. It's beautiful, interiors are amazing and बहुत अच्छा ambience है, and the food is so yummy. मैं कभी भी इतनी fan नहीं थी sushi और Pan Asian की, but I loved the food over there and it was so good. मेरे friend ने non-veg try करा था and I'm obviously a vegetarian, so दोनों factors में वो बहुत अच्छा था. So you should definitely try Maruchi. In Khan Market there's this cafe, Fat Lulu's or Lulu's. वहाँ की garlic bread I really love. Garlic bread and pizza, it's really really good. You should really try the pullover, पता नहीं क्या है यार. Garlic bread का ना बहुत tasty है, उसको आप ऐसे खींचते हो और अंदर से cheese आता है. एक दो और cafes है which I really love. For coffee, Starbucks obviously मेरी main priority है, but when I really want to go out, we go to this Blue Tukai cafe which is in GK. छोटा सा courtyard ऐसे बना हुआ है और वहाँ पर जाकर हम वेज सैंडविच लेते हैं. फलाफल और हमस वाला सैंडविच आई थिंक सो होता है, एंड सैलेड सैंडविच इज रियली गुड. इट्स वेरी हेल्दी. हमस एंड पीटा एंड फलाफल विच इज रियली हेल्दी, एंड वी हेल्दी के साथ हम एक अनहेल्दी चीज़ लेते हैं विच इज़ पेरी पेरी फ्राइज, विच इज़ अ मस्ट. यू शुड गो ट्राई इट आउट. एंड ब्लू टुकाइज कॉफी वियतनामी स्टाइल इज रियली अमेजिंग. यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट. यम यम चा का भी खाना बहुत अच्छा होता है. इट्स इन खान मार्केट एंड आई फील बहुत जगह है यम यम चा, उसका भी खाना बहुत अच्छा होता है. डम्फोक, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इट्स डम्फोक इन ITC मौर्या. इट्स नॉर्थ इंडियन एंड द फूड इज सो गुड, मतलब माउथ वाटरिंग. उसके साइड में बुखारा है, बट मैंने बहुत लोगों से सुना कि बुखारा से बहुत ज्यादा बेटर डम्फोक है. बुखारा का बहुत ओवर रेटेड है दाल मखनी के पीछे जो वो इतना फेमस है, एंड आई हर्ड इट फ्रॉम अ फ्रेंड ओनली कि जैसे पहले उनकी दाल मखनी होती थी, आई डोंट थिंक सो अब वैसी रही है. बट द डम्फोक रेस्टोरेंट, इट्स रियली गुड. द फूड इज amazing. You will definitely enjoy it. And now coming to parties, nowadays I'm going to this club, restaurant hash club, which is of my friends only, which is Bardos. I go to Bardos every Saturday and the vibe is really good. I genuinely love it over there. I used to go to Donna before, Dear Donna, but now all of my friends, we just go to Bardos, and I'm so proud of my friend that he opened Bardos. It's a beautiful property. It's usually jam packed, so you have to make a reservation before coming there. On Wednesdays there's this Sufi night which is really good, which I haven't tried and I really want to try it out, but Wednesdays को मैं इतनी busy होती हूँ कि मैं रात तक आते आते इतनी थक जाती हूँ कि मेरा मन नहीं करता कहीं बाहर निकलने का, but I'll definitely try it out after Bali. There's this Friday night as well. Then Saturday night is amazing. जब भी आप बारडोज जाओगे आपको मैं Saturday night को वहाँ पर ज़रूर मिलूंगी. मुझे इतने क्वेश्चन आते हैं आप बारडोज ही क्यों बैठे रहते हो, because I genuinely love the music over there. It's combination of everything. उसकी music का भी combination is really good. I genuinely enjoy it there, and plus there is this roof. जब भी आप थोड़ा सा ऐसा फील करते हो मुझे लोगों के आसपास नहीं रहना, आप रूफ पे जाकर आराम से चिल कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ. It's overall really good. I genuinely love it, and the food is also very good. Then there's this Opa night in Bardos only, which is on Sunday, where you can break plates actually. So अगर आपको गुस्सा आ रहा है आप संडे को वहाँ पर जरूर जाना और प्लेट्स ब्रेक करके अपना सारा गुस्सा निकालना. जितने भी लोग जिनका ब्रेकअप हुआ है ना, you should definitely go there and check it out. On Sundays there's this Opa night where you can break plates. I think it's a very good and unhealthy way of like अपना aggression निकालने का.
टू ब्रेक प्लेट्स एंड उस पर ना मुझे लगता है आपको जो प्लेट्स मिलती है ना, मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये बहुत मन है जाकर करने का, प्लेट्स के ऊपर जिसने भी आपका हार्ट ब्रेक करा ना, आप उसका नाम लिखकर उसको तोड़ो, अच्छे से तोड़ो, फेंको, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, सो यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। अब नेक्स्ट है व्हाट यू हैव स्टडीड लाइक इन ग्रेजुएशन, व्हाट यू डिड इन ग्रेजुएशन। तो आई डिड जर्नलिज्म फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी व्हिच आई हैवंट completed properly till yet, मतलब I have completed but मैंने अभी तक अपनी डिग्री नहीं ली है, सो मुझे अपनी डिग्री लेनी है। मूवी रिकमेंडेशंस, मूवी रिकमेंडेशन में आपको दो टाइप की रिकमेंडेशन मिलेगी, एक मेरी जो कि बहुत ही फेरी टेल मूवीज देखती है, और एक मान की मिलेगी जो बिल्कुल साई-फाई मूवीज देखता है, जिसकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मान की बहुत प्रैक्टिकल मूवीज होती है विच आई हेट, आई एम अ धर्मा किड, धर्मा प्रोडक्शंस की जैसी मूवी होती है ना, मुझे वैसी पसंद है बिल्कुल, और मान को बिल्कुल पसंद नहीं है। मान पहले अब अपनी दे दे। इंसेप्शन और लूसी देखी हुई है मैंने, शायद हरबिन देखी मैंने, वो देखी है आई, या उसमें बहुत वो फिक्शन मूवी है बट इट्स अ रियली नाइस मूवी, इट्स EYE, और वो बहुत, उसमें ऐसे एंड में उसका वो पावर होती है, उसके पास कुछ जल जाता है, वो मतलब हॉरर मूवी प्लस कुछ ऐसी सी मूवी है, बट इट्स अ रियली नाइस मूवी। और इट भी मैंने सुना है बहुत अच्छी है लोगों से, इट। एंड मैं अपनी मूवी बताती हूँ, आई लव प्रिंसेस डायरीज, मैं उसको बैक टू बैक देख सकती हूँ, उसमें प्रिंसेस डायरीज आई रियली लव, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जवानी है दीवानी, दीज आर द मूवीज विच एक्चुअली सबने ही देख रखी है। सो रिसेंटली मैंने Amazon प्राइम पे वो देखा था, द समर आई टर्न प्रिटी, एंड आई जेन्युइनली लव दैट शो, इट्स अ वेरी टीनेज romantic love story and I genuinely loved it. And nowadays I am watching खतरों के खिलाड़ी and I'm very much involved in it. मुझे ऐसे genuinely ऐसे लगता है मैं अपने fears को overcome कर रही हूँ जब मैं खतरों के खिलाड़ी देखती हूँ। ऐसे स्नैक्स वगैरह मुझे वो नॉर्मल लगने लग गए हैं, ये नहीं है अगर वो मेरे पास अभी आ गए तो मुझे ज़रूर डर लगेगा, बट अभी खतरों के खिलाड़ी देखकर मुझे वो नॉर्मल लगने लग गए स्नैक्स एंड ऑल। मैं हर रात को वो देख रही हूँ एंड आई एम डेली एंजॉइंग इट, मेरा बहुत अच्छा टाइम पास होता है, सो आई थिंक यू शुड ऑल्सो गो एंड वॉच इट बिकॉज इट्स वेरी फनी। राजीव आदित्य क्या नाम है उसका, सरनेम कुछ है ऐसा, एंड ही इज़ वेरी फनी, प्लस निशांत इज ऑल्सो देयर, बिग बॉस के बहुत ज़्यादा कंटेस्टेंट सारे भरे हुए हैं वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा फनी लगता है मुझे खतरों के खिलाड़ी, प्लस आप फियर्स भी अपने ओवरकम करते हो, सो यू शुड डेफिनेटली गो ट्राई इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर रियल स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन? नो एड्स प्लीज, द प्रोडक्ट्स यू एक्चुअली यूज दैट हैव वर्कड फॉर यू, आई लव यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल लव यू टू, एंड माई रियल स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन for face right now I'm using Innisfree cleanser and I swear it's not an ad, updated routine बता रही हूँ अपना, and I'm being very honest, मैं cleanser यूज़ कर रही हूँ Innisfree का, ग्रीन टी क्लेंजर है क्या है मुझे नहीं पता, फोम क्लेंजर कुछ लिखा हुआ है इस पर, एंड इट्स रियली नाइस। प्लस आई एम यूजिंग दिस सिरम फ्रॉम Innisfree ओनली, ग्रीन सीड सिरम। मैं बीच बीच में ऐसे ना नाइका के वो लगा लेती हूँ फेस मास्क जो होते हैं डिफरेंट कोई भी फ्रूट का, कभी एवोकाडो लगा लिया, कभी राइस फेस मास्क लगा लिया, तो मैं यूजुअली ऐसे करती रहती हूँ, जो नाइका में मास्क मिलते हैं वो लगा लेती हूँ। मैं सनस्क्रीन इस बार बहुत ज़्यादा आई थिंक सो अच्छे से लगा रही हूँ अब हर बारी मेकअप से पहले, एंड मुझे पता नहीं सनस्क्रीन आई फील इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर माई स्किन, एंड मैं यूजुअली मेन सनस्क्रीन पे फोकस रहती हूँ। सो संडे राइली के प्रोडक्ट्स आर रियली गुड, सो मैंने वो यूज़ करे थे, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे है, मेरे ख़त्म हो गए, कृतिका के थे वो एक्चुअली, तो ख़त्म हो गया, अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरी इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदने की, बट आई जेन्युइनली लव संडे राइली। हेयर केयर में आई एम यूजिंग ओलाप्लेक्स का शैम्पू नंबर 5 एंड लॉरियल का द ऑरेंज वन, द क्रीमी वन, वो तो मैं ऐसे स्विच करती रहती हूँ दोनों शैम्पूज में। एंड अभी मैंने कल ट्राई करा है गीजू या जीजू, यार आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस ब्रांड्स। गीजू इज अ ऑयल बाय एन इन्फ्लुएंसर नेगिन, एंड शी इज़ एन इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर, आई रियली लव हर, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एंड उसकी एक हेयर ऑयल ब्रांड है विच इज़ गीजू, एंड इट्स वेरी फेमस आउटसाइड इंडिया, एंड आई डोंट थिंक सो आपको ये ऑयल इंडिया में मिलता है, सो हम जब दुबई गए थे मैं तभी ऑयल लेकर आई थी, इट इज़ रियली गुड। मैंने कल ट्राई करा और मुझे अपना टेक्स्चर बहुत अच्छा लग रहा है हेयर का। यूजुअली माई हेयर दे आर वेरी फ्रिजी, and after using that oil frizziness थोड़ी सी कम हो गई, I'm loving it, now I'll start using it regularly. Is Dyson worth it? Any alternative of it? To be honest, I don't have any alternative for Dyson because I actually feel Dyson is very easy, and Dyson is my go-to actually. Whenever I want to go somewhere and I don't have time, I just take chunks of my hair and put Dyson, and it really works for me, and I genuinely love it. And I actually don't remember any alternative right now because since an year now I've been using only Dyson, so I'm so sorry, I don't know any alternative. And मान is saying Siska में alternative है,
तो आप वो भी चेक कर सकते हो. मैंने कभी ट्राई नहीं करा. अफोर्डेबल मेकअप आइटम फॉर टीनेजर. फॉर अफोर्डेबल मेकअप आइटम कंसीलर्स यू शुड ट्राई मेबलिन का फिट मी. इट्स आई थिंक सो उसकी रेंज है 400 या कुछ है. प्लस के ब्यूटी के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि रेंज में आते हैं. एंड के ब्यूटी इज़ जेन्युइनली रियली गुड. आई लव के ब्यूटी, नो एड्स. एंड आप नाइका के बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो. नाइका इज़ वेरी अफोर्डेबल. जो नाइका के एक्चुअली प्रोडक्ट्स है दे आर वेरी वेरी अफोर्डेबल. प्लस यू विल गेट सो मैनी गुड थिंग्स ऑन नाइका. एंड मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ आप किसी ब्रांडेड उसमें जाओ. जो नाइका के एक्चुअली ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं, यू शुड गो एंड ट्राई इट आउट. दे आर वेरी अफोर्डेबल. शुगर कॉस्मेटिक्स मतलब वो दोनों उसमें आता है. कुछ प्रोडक्ट्स उसके थोड़े से उस पर भी हो जाते हैं एक्सपेंसिव साइड पे, और कुछ अफोर्डेबल भी हो जाते हैं. आप चेक कर सकते हो शुगर कॉस्मेटिक्स भी. आई एम टेकिंग दिस लास्ट क्वेश्चन. मैनिफेस्टिंग योर क्रश. आई ट्राइड सो मैनी मेथड्स, नथिंग वर्कड. To be honest, guys, please don't manifest anyone in your life. Manifestation is real, manifestation is very much real, but you should not manifest a face or a person. Actually, whenever you're manifesting someone's face and you're putting your mind and heart to it, it will work. You'll actually get him or get her, but it's really not good. बिकॉज जैसे बड़े लोग हमारे एंसेस्टर्स बोलते थे ना, अगर किसी भी चीज़ की मन्नत मांगो ना, उसका आपको कुछ आगे से देना भी पड़ता है. अगर आप कुछ मांगोगे तो आपको बदले में कुछ देना भी पड़ता है. सो आप मैनिफेस्टेशन में अगर आप ये चीज़ें मांग रहे हो, किसी एक पर्सन को मांग रहे हो अपनी लाइफ में, फॉर दैट मैटर अपने क्रश को अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में आ जाएगा. बट बहुत प्रॉब्लम्स और बहुत कॉन्सिक्वेंसेज और सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जिससे वो वर्क नहीं करेगा फॉर लॉन्ग रन. सो इन माई ओपिनियन यू शुड नेवर मैनिफेस्ट अ फेस or a person in real life. Obviously you can manifest all those qualities which you want in a life partner, but you should never manifest a face. Just stop doing it if you're doing it right now. Trust me, it never works out in a good way. Take it from me, I've experienced it. It never works out. So guys, that's it for today. I hope you liked this podcast, and this was my first solo podcast. I hope you enjoy it, and I definitely miss Kritika over here. मैं बार बार ऐसे देख रही थी, मुझे लग रहा था कृतिका बैठी हुई साइड में. But yeah, it was really good. हमें करना चाहिए, कभी कृतिका को ऐसे अकेले करना चाहिए, कभी मुझे अकेले करना चाहिए. So yeah, I loved it. मुझे लगा नहीं था कि मैं कर पाऊँगी. I was very nervous before starting the podcast, but I did really good. Hello. Thank you so much, guys. I hope you enjoyed this podcast. And if you did, don't forget to rate us on Spotify and like, share, and subscribe us on YouTube. See you in the next one. Bye, guys.